Hello, welcome to the lecture. In this lecture, we are going to look at the approaches of positioning. So, we are continuing the lecture of marketing management. Right. In the previous lecture, we have looked into targeting. What is targeting? And then we have looked into positioning. In this particular lecture, we are going to look at approaches, different approaches of positioning. Right. So let us just begin. Okay, so first of all, what is the approach? किस हिसाब से अप्रोच करेंगे पोजीशनिंग को? So first of all, here we have attribute positioning. Now what is this? This approach main focus is on highlighting a specific feature or attribute of the product. एक प्रोडक्ट का मेन फीचर क्या होता है? ठीक है, स्पेसिफिक फीचर या क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे एट्रीब्यूट पोजीशनिंग. फॉर एग्जांपल सेंसोडाइन टूथपेस्ट, वो अपना प्रोडक्ट को किस हिसाब से पोजीशन करता है? दे से दैट दे आर गुड फॉर सेंसिटिव सॉर्ट ऑफ टीथ. सो उसका फीचर क्या हुआ यहाँ? उसका फीचर ये हुआ कि वो सेंसिटिव टीथ पर काम करेगा. It will repair those sort of teeth. It will be beneficial for those sort of teeth. Right? So that is feature. Feature के हिसाब से consumers के दिमाग में position करना. That is attribute positioning. Next is benefit positioning. So benefit positioning का मतलब क्या होता है? It emphasizes on the benefits the product is going to offer. सिंपल क्या बेनिफिट एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा एक कंज्यूमर को, दैट इज़ नोन एज बेनिफिट पोजीशनिंग. फॉर एग्जाम्पल, कोलगेट प्रमोट्स itself as it benefits the consumer. It provides stronger teeth for the consumer and fresh breath throughout the day. सो क्या वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है? एक प्रोडक्ट क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है? जैसे सर्फ एक्सेल, वो क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है? इट क्लीन्स आउट ऑल दी डर्ट. ज़्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट वी आर गोइंग टू यूज़ द सर्फ एंड ऑल द स्टेन्स आर गोइंग टू बी रिमूव्ड. सो उसका टैगलाइन भी है दैट दाग अच्छे हैं. सो विदाउट एनी मच एफर्ट द डर्ट और स्टेन इज़ बीन रिमूव्ड. सो हियर यहाँ क्या हो रहा है? बेनिफिट. एक प्रोडक्ट क्या बेनिफिट ऑफर कर सकता है कंज्यूमर को, सो उस हिसाब से कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना प्रोडक्ट के तरफ. दैट इज़ बेनिफिट पोजीशनिंग. अब नेक्स्ट क्या है? यूज़ और एप्लीकेशन पोजीशनिंग. सो दिस अप्रोच पोजीशन द प्रोडक्ट एज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर अ स्पेसिफिक यूज़ और फॉर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन. तो इसका मतलब क्या है? This approach shows that the product is ideal for particular situation. एक situation में सबसे useful होना चाहिए. Specific situation, specific time या फिर specific purpose के लिए. ठीक है? For example, जैसे कि Nescafe, वो कैसे प्रमोट करता है? During the morning period, we start our day with having a cup of Nescafe. So we are going to be awake throughout the daytime and we will be energetic while doing any sort of work. Even while working in the office or while studying at home, we are going to feel refreshed. ठीक है? So ये approach क्या बोलना चाह रहा है? This approach is ideal for एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो प्रोडक्ट बहुत यूज़फुल है फॉर द कंज्यूमर्स. जैसे कि ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स, व्हेन द क्रिकेटर्स आर प्लेइंग, दे ड्रिंक रेड बुल दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द क्रिकेटर्स और टू द स्पोर्ट्स पर्सन. सो दिस इज एप्लीकेशन पोजीशनिंग. When or where this product is going to be best useful for the
consumers. That comes under application positioning. अब next we are going to look at user positioning. So इसका टारगेट होता है ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूज़र और डेमोग्राफिक. एक सेगमेंट ऑफ यूज़र के लिए वो प्रोडक्ट यूज़फुल होना चाहिए. जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन्स बेबी का पाउडर दैट इज़ यूज़फुल फॉर द बेबीज़ एंड फॉर द पेरेंट्स. ठीक है. लाइकवाइज लॉरियल men expert that is useful for the men, specifically for the men who want to groom, who want to keep their skin care tight. So they use the L'Oreal men skin care expert. So वो particular segment के लिए जो product useful है that comes under user positioning. User are going to be attracted towards the product if the launching or if the ad of the product is being done in such a manner. Next क्या है? Competitor positioning. So in under this approach the product is positioned directly against a competitor's product. अब competitor जो भी product ला रहा है उसके basis पर उसके comparison करना है. We are going to compare our product with the competitor's product and then we are going to identify whether our product is best or not. Right. So on the basis of price we can say, on the basis of features हम लोग का प्रोडक्ट कैसे बेहतर है with regard to the other competitors. That comes under competitor positioning. The goal, the main aim here is to take market share by challenging the other competitors in the marketplace. An example of this would be that Domino's is saying that they are going to deliver the pizza within 30 minutes, और अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं then they are going to provide the pizza free of cost. So if there are small startups which are competing with this bigger Domino's, so here they are not going to compete, they will not be able to beat such a huge marketing channel or franchisor we can say. ठीक है. So how a product is competing with the other competitors in the marketplace, उस हिसाब से पोजीशनिंग करना है एक प्रोडक्ट का. नेक्स्ट इज कल्चरल सिंबल पोजीशनिंग. तो इसके हिसाब से क्या है? सम ब्रांड्स पोजीशन देमसेल्फ एज अ सिंबल ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर और ऑफ अ पर्टिकुलर लाइफस्टाइल. राइट. सम ब्रांड्स वो पोजीशन करेंगे अपने को एज अ सिंबल ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर or of a particular lifestyle. An example of this could be that Harley Davidson is a symbol of American freedom and of American adventure. So if a person is riding Harley Davidson, then he will feel more empowered, he will feel more freedom, more luxurious lifestyle. So इसमें क्या हो रहा है? एक इमोशनल सॉर्ट ऑफ पोजीशनिंग इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स किया जा रहा है ताकि कंज्यूमर अट्रैक्ट हो सके प्रोडक्ट से. दे कुड रेजोनेट देमसेल्व्स विद द ब्रांड, विद द आइकन, विद द सिंबल विच द एक्चुअल ब्रांड इज यूजिंग. It emotionally connects the brand with the person's identity, with the personal physique. So here main goal क्या होता है? To build trust, to build emotional connection, good relationship. और ये possible है जब brand is going to share that cultural bondage, that cultural relationship, or they can share the lifestyle of the consumer. Other example of this would be of Air India. Air India क्या करता है? They uses the Maharaja mascot. ठीक है. That symbolizes Indian culture and hospitality. It shows gratitude towards the consumers who are
getting there to receive the service of the Air India. This comes under cultural symbol positioning. Now let us look at the next slide, that is preemptive positioning. अब इसका मतलब क्या हुआ? Being the first to claim a specific feature or benefit before the other competitors are going to do that in the marketplace. So इसका मतलब क्या हुआ? एक फीचर एक ब्रांड रियलाइज कर रहा है in comparison to the other competitors, and they are identifying, they are claiming the specific feature even before the competitors are doing. तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो गया यहाँ. They are getting to know a certain feature, to know a certain strength of themselves, and they are competing themselves with the other competitors. For example, Pepsodent क्या claim करता है? They claim that they fight germs 24/7. So even if the other brands are going to know about this at a later period of time, but still the consumers are going to think that Pepsodent was the first one to claim, to have a tagline which says that, which claims that they fight germs 24/7. So they are going to be the best in the marketplace because they have identified the feature for the very first time. Likewise, Fevicol positioned itself as the first strongest adhesive. So उसके बाद बहुत सारे gums वगैरह आए, but Fevicol was the first to position themselves in the mind of the consumer. This is preemptive positioning, having a first user advantage. Now next is superlative positioning. इसका मतलब क्या होता है? Claiming to be the best at something. Right, we are best from the other competitors in the market space. We are super than the other competitors in the marketplace. जैसे कि Apple provides premium product, best quality, best features, high camera quality, then better camera quality of the phones. So they are superior. They position themselves in the mind of the consumers that they are superior, and if anyone is going to take their product, then they are going to be very happy and satisfied with the service which the Apple company is providing. Likewise, Amul, another example of this would be of Amul का टैगलाइन क्या है? द टेस्ट ऑफ इंडिया. सो वो लोग क्या पोजिशन किए हैं? दैट दे आर द मोस्ट ट्रस्टेड एंड बेस्ट डेयरी ब्रांड इन द होल मार्केट प्लेस. सो दे आर सुपीरियर देन द अदर डेयरी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर्स. दैट इज सुपरलेटिव पोजिशनिंग. लास्ट क्या है? एक्सक्लूसिव पोजिशनिंग. सो दिस इज पोजिशनिंग एज पार्ट ऑफ एन एलिसिट और एक्सक्लूसिव ग्रुप. सो यहाँ पर ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? देर आर ओनली फ्यू consumers who can purchase that product in the marketplace, and anyone who is purchasing that product in the marketplace, they are having a very illicit personality, or they are very good. So positioning as a part of an illicit or exclusive, superior, superlative person in the society, so that is exclusive positioning. जैसे कि an example of this would be of Rolex watches. They position themselves as luxurious or illicit manufacturers for the successful individual. Only the successful individuals can take up their watches because they are providing exclusive products. Right? So this is the exclusive positioning. So this was all about today's lecture. Thank you. You can subscribe to my channel, and if you are going to have any queries, you can surely comment that. Thank you.